In our previous e-lecture, we have learnt about what is shadow, what are the causes behind the forming of shadow, what are the things required to form the shadow, and what are the characteristics of shadow. Today, as I promised you, you will be amazed to know that this beautiful concept of shadow formation is also done by heavenly bodies in the sky. Heavenly bodies like moon and the earth. Do you know what is the source of light there to form these shadows? That is sun. And where is shadow form? Sometimes on the surface of the earth and sometimes on the surface of the moon. And these are known as eclipses. Grahan, Surya Grahan, Chandra Grahan by a solar eclipse, lunar eclipse. How are you all? Good morning, dear students. Ready to learn science with me? Let's go. Today we are going to discuss about page number 192. We will discuss an activity to verify that the size of the shadow depends upon the distance between the source of light and opaque object. And page number 193 is having solar eclipse and lunar eclipse. We will discuss about these two beautiful concepts at page number 193, and at page number 194 we will discuss about a warning given, activity number 4, and a do you know. So dear student, first of all, we are going to discuss about activity number 3. Through this activity, we will verify that the size of the shadow depends upon the relative position of the source of light and opaque object. Now, from this diagram, can you tell me what is the source of light? That is torch. And what is opaque object? That is cardboard piece. And the back wall, the shadow is formed of that cardboard piece, is behaving as screen, where we will get the shadow of this cardboard piece. So switch on the torch, this powerful torch, and fall the beam of its light over the cardboard piece. What you will get? You will get a shadow on the screen as shown in the diagram. Now, what we are going to do? We are just moving the cardboard piece towards the source of light. You can see in the diagram, कार्डबोर्ड पीस जहाँ पे था उससे उसके पोजीशन को हमने चेंज कर दिया और सोर्स ऑफ लाइट की तरफ लेके आ गए. नाउ ऑब्जर्व द साइज ऑफ द शेडो. It is bigger than the shadow size of the shadow made earlier by this cardboard piece. From the above activity, from this activity, we can say as the light source is moved closer to the object, a larger shadow is formed. So we can conclude in this way: if the distance between the source of light and opaque object is less, the shadow grows bigger, and if the distance is more, the shadow is shorter one. You can compare with your डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल. सुबह जब बैग लेके घर से निकलते हो तो आप देखना आपकी शेडो लंबी बनेगी क्योंकि सन आपके थोड़ा नज़दीक है. लेकिन लेकिन जब दोपहर में आप वापस आते हो बैग लेके, आप देखना आपकी शेडो बिल्कुल आपके कदमों में बनती है, छोटी सी, क्योंकि सन ऊपर स्काई में ओवरहेड आपसे ज़्यादा दूर चला गया है. In this way, you can compare also that the size of the shadow depend upon the distance between the source of light and opaque object. This is all about activity number 3. Now we are going to discuss about do you know
given at page number 192. The position of the sun affects the position and length of the shadows formed. This phenomenon has been used in sundials. They are used to tell us the time of the day. Jantra Mantra of Delhi and Jaipur. Even Kalpana Chawla Planetarium at Kurukshetra is having this device of measuring the time naturally, that is called the sundial, dear student. Sun एक ऑब्जेक्ट की मदद से एक गोल डायल बना के इस तरह से सेट किया जाता है कि वो आपको टाइम बता पाए होल डे. Now this is the time to look into the sky. As all of us have heard of solar eclipse, Surya Grahan, and lunar eclipse, Chandra Grahan. These are nothing but examples of formation of shadows in nature. And how and when these eclipses, means solar eclipse and lunar eclipse, occur, and what is the reason behind of that, we will discuss there, page number 193. First of all, we are taking solar eclipse. As you know, dear student, Earth rotate at its axis and complete one rotation in 24 hours. By doing the rotation along with it also revolve around the sun, and that one of the revolution is completed in 365 1/4 days. Likewise, moon also rotate at its axis as well, revolve around the earth. And due to this rotation and revolution of these two heavenly bodies, sometimes what happen, when the moon comes in between the sun and the earth, it casts its shadow on the earth, and this can block or partially block our view of the sun. This phenomenon is called solar eclipse. और हिंदी में मैं ऐसे बता सकती हूँ कि जब ये रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों हेवनली बॉडी कर रही थी, तो एक टाइम ऐसा आता है कि सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, एंड सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है. मून क्योंकि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो जब मून पे सन की लाइट पड़ती है, सन की लाइट वहीं पे ब्लॉक हो जाती हैं और मून अपनी शेडो धरती पे कास्ट कर देता है. धरती के जिस पोर्शन पे शेडो गिरती है, वो पोर्शन, उस पोर्शन पे रहने वाले लोगों को सन दिखाई नहीं देता, और उनके अनुसार ये सूर्य ग्रहण हो जाता है. सूर्य को ग्रहण लग गया. Sun is appear black to them, and that is solar eclipse. Solar eclipse will be complete solar eclipse or partial solar eclipse. It depends upon the location, whether the moon is passing directly or partially. And dear student, solar eclipse occur on a new moon day only. अमावस्या को होता है. जब भी सोलर इक्लिप्स होगा, अमावस्या को होगा. When the sun, the moon and the earth happens to be a straight line with the moon coming in between and the sun and the earth, that is. If someone asks a question to you that state the relative position of the sun, moon and the earth during a solar eclipse, सन, मून एंड अर्थ किस पोजीशन में होते हैं जब सोलर इक्लिप्स होता है, तो यू कैन से दैट ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. दिस इज ऑल अबाउट सोलर इक्लिप्स. This is the time now to discuss about the lunar eclipse. Again, during the course of rotation and revolution, when these two heavenly bodies along with the sun comes in a straight line and earth comes between the sun and the moon. Being an opaque object, earth blocks
the sunlight and cast its shadow on the moon, and that time moon appears black to us, and that is called lunar eclipse. It always occurs during the full moon day. जब भी लूनर इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो पूर्णिमा वाले दिन होता है। इसको याद रखने का एक तरीका मैं बता सकती हूँ आपको। कंफ्यूज होते हैं कई बार माइंड में कैसे सेट करना है हमने। आप लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण वाला याद कर लो। और वह कैसे याद करोगे कि चंद्र ग्रहण, चांद इज सपोज टू बी द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन, पूरा चांद, एंड उसी दिन इसको ग्रहण लगता है। तो यदि आपको लूनर इक्लिप्स का याद हो गया कि लूनर इक्लिप्स फुल मून डे को होता है, पूर्णिमा का होता है, तो उसका अपोजिट सोलर इक्लिप्स अमावस्या वाले दिन होता है, न्यू मून डे वाले दिन होता है। इस तरह से दोनों इक्लिप्सिस का व्हेन डज सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स का आपको याद हो जाएगा। And if I'm going to ask a question, state the relative position of the sun, moon and the earth during the lunar eclipse, your answer will be that the earth comes between the sun and the moon during the lunar eclipse. Now we are going to discuss about page number 94. A warning is given there. And we will also discuss activity number 4 and a do you know. What is the warning? We should not look at sun directly with the naked eyes during a solar eclipse. This can cause very serious and permanent damage to our eyes. There are special devices and arrangements for observing a solar eclipse. We should use them and observe all the relevant precautions. सो ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट, कभी भी हमें सोलर इक्लिप्स को या सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आइज़ को परमानेंट डैमेज, हानि हो सकती है। स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, उन्हीं की मदद से हमें इन इक्लिप्सिस को देखना चाहिए। नाउ एक्टिविटी नंबर 4 एंड प्रॉमिस मी डियर स्टूडेंट, यू विल डू दिस एक्टिविटी एट होम। थिंक ऑफ अ पावरफुल टॉर्च एज द सन। टॉर्च को सन बना लो, अ ग्लोब एज द अर्थ एंड अ टेनिस बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्टैंड एज द मून। अरेंज दीज ऑब्जेक्ट्स इन अ वे दैट corresponds to the formation of a solar eclipse and lunar eclipse. इनको इस तरह से सेट करो कि एक बार आप लेके आ जाओ अर्थ बीच में, सन और मून के, तो आपका बन जाएगा लूनर इक्लिप्स, और जब आप मून बीच में ले आओगे दोनों के, तो बन जाएगा सोलर इक्लिप्स। आई एम नॉट श्योर डियर स्टूडेंट, बट आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी टू यू इन अ सेपरेट वीडियो. Now a do you know is there to discuss, and we are going to do that. Solar eclipses cannot be seen on every new moon day, and similarly lunar eclipse cannot be seen on every full moon day. This is because of orbit of the moon around the earth is not quite in the same plane as is the earth orbits around the sun. The two paths are tilted with respect to each other. Because of this, it is only sometimes that the sun, the earth and the moon lie on a straight line on a new moon day or a full moon day. We therefore see a lunar or a solar eclipse only on such rare occasions. Let me conclude this topic in a way that earth and moon, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन जो इनका ऑर्बिट होता है वो थोड़ा टिल्टेड होता है। ऑर्बिट टिल्टेड होने की वजह से हर बार ये उसी दिन एक लाइन में नहीं आते, बल्कि ये रेयर ओकेशन होता है कि
एक न्यू मून डे या फुल मून डे को तीनों एक लाइन में हो। जब भी एक लाइन में होते हैं तीनों, न्यू मून डे को तीनों एक लाइन में हुए तो सोलर इक्लिप्स, फुल मून डे को तीनों एक लाइन में हुए तो लूनर इक्लिप्स। इस तरह से डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको इक्लिप्सेस क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कब बनते हैं समझ आ गया होगा। So don't forget this time to witness the interesting and amazing phenomenon of eclipses coming ahead। जब भी कभी सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स होने वाला हो तो स्पेशल डिवाइस की मदद से जरूर ऑब्जर्व करोगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।